Good morning, students. First of all, I welcome to all the second year students, second year science students, and I also thank to both the directors and Principal Padi sir for their unique attempt like online classes. However, today I am going to start a new chapter, report writing in book 3. Students, you know that in your book 3 you find a chapter reporting events and business matter. Reporting events and business matter. In that chapter you find a type of question, report writing, which comes 10 marks in the council exam. Before going through the chapter report writing, we have to know what is a report. माने रिपोर्ट राइटिंग जानिबा पूर्वरु रिपोर्ट लेखिबा पूर्वरु आमे जानिबा दरकार रिपोर्ट कोन. एटा काउंसिल एग्जाम रे 10 मार्क आसे with alternative questions, 2 questions, and you can write it in any one. प्रथम आछि what is a report. A report is a communication for someone who has the information to someone who wants to use that information. Means it is a communication, it is a type of communication, and that communication means someone has the information and he wants to communicate with others. जन पाखरे किछि खबर अछि से ताको अन्य मान को जणैबा को चाहूछि. It is a type of communication. It is also called what? A written statement. Report is a written statement of facts of a situation, project, process or test is called a report. Report is called, it is a written statement. बेले बेले एटा को आमे लेखा माध्यम रे प्रकाश करिथाउ. कहिले होबा नाही ताको लेखियो को पड़े. कोनोसे एक परिस्थिति को नेकी, कोनोसे एक प्रोसेस को नेकी ताको मध्ये रिपोर्ट को आ जाय पारे. ए रिपोर्ट शब्द, the word report is derived from the Latin word reporter, जार मीन्स है, जार अर्थ है कैरी बैक. एटा लाटिन शब्द रिपोर्टर रु आछे रिपोर्ट, जार अर्थ होछि कैरी बैक. A report is a formal piece of composition presented in a conventional format. बेले बेले आम कथा माध्यम रे मध्ये गोटे घटना को अन्य को जणै पारू. बेले बेले आम लेखा माध्यम रे अन्य मान को जणै पारू. It is written for particular person or group. एटा केवल जणे व्यक्ति पाखक लेखा जाय परिबो, अन्य ग्रुप बा दळे लोक मान को पाखक आम जणै परिबा. जते बेले when we want to communicate with someone or to a group of people, at that time we can take the help of a report. Next, it is a study of a problem, a situation or an activity. कहा ऊपर आम रिपोर्ट लिखित साधारणतः इट इज ए स्टडी ऑफ प्रॉब्लम. कौन से समस्या को नहीं, कौन से सिचुएशन बा परिस्थिति को नहीं कि बा कौन से कार्य को नहीं कि आम रिपोर्ट लिखू. इट मे इंक्लूड पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड सजेस्ट वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम. जहाँ प्रॉब्लम आम फेस करूँ ताको केमिति आम समाधान करि परिबा, तार समाधान केमिति बाट बाहरिबो ताको मध्ये आम रिपोर्ट रे स्थान दी थाउ. इट मे इनक्लूड एनालिसिस एंड इवालुएशन ऑफ फैक्ट्स. यह मध्य गोटे फैक्ट को आम इवालुएट करिथाउ, ताको मूल्यांकन करिथाउ, ताको एनालिसिस करू, ता मध्ये रिपोर्ट भितरे स्थान पाए. A report is a spoken or written account of something that one has observed, heard or investigated. Someone has observed something, someone has heard something, someone has also investigated something that can be written, and it is called a report. A report is written for a clear purpose and to a particular audience. The information is presented in clearly structured format. जेते बेला आमे रिपोर्ट लेखु
सेतेबेले आम मन रखा दरकार आम पाई निश्चित भाव में गोटे फॉर्मेट दरकार. In case of report writing, we must remember a clear structured format. Without format, sometimes you have to lose the mark. Making use of sections or headings so that the information is easy to follow. To make it easier or to make it easy, to make the report easy, first we have to make what? Sections, some sections and headings, because headings are necessary, some sections are necessary for the report writing. Report can be formal or informal. Each report has a form, whatever the report may be. I will tell you later. There are various types of reports, but what report may be, but each and every report has a clear format, clear form, and each report has a suitable heading at the beginning. At the beginning of the report, first we must write the heading of the report. This is a very vital point. You must remember what? That is heading of the report. The information it contains is arranged in a logical order, and whenever you describe the body or what information is there, and using all the information that you have to write the report, these information must be arranged in a logical order, or it is called chronologically. It is divided into short paragraphs. Sometimes the students follow some paragraphs and written in a simple language. This is also another important point. Report must be written in simple language as far as your practice. तमर अभ्यास अनुसार, तमर नॉलेज अनुसार तमें माने जिते सहज इंग्राजी, जिते सहज भाषा रे तमें कौन रिपोर्ट लिखा चेष्टा करिवे. से कहुई कौन, इट इज डिवाइडेड इन शॉर्ट पैराग्राफ एंड रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज. एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट द राइटर गिव्स his signature in full and sometimes the date of writing the report. रिपोर्ट लेखा सरीबा परे जेतेबेले रिपोर्ट लेखा सरीगला शेष रे जे लेखुची, द रिपोर्टर जे लेखुची, द राइटर ता निजर ना फुल नेम शेष लिखिबो. एवं बेले बेले मध्य हमको जो दिनर रिपोर्ट लेखा जाउची से दिनर डेट मध्य लिखा पड़े एट दि एंड शेष. नेक्स्ट आसुची जे द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. whenever we think that how many reports are there. Reports, before that I am going to say another thing. To write the report is the job of a reporter. You have to think yourself as a reporter. Later I will tell you something about it. Reports are of various types. How many types of reports that comes to your mind? Reports are of various types, such as newspaper report. Very important report. This is called what? Number one, newspaper report. Second one, annual report. And annual report has two parts, like number one, presentation. Number two, publication. What is presentation and what is publication? I will tell you later when I will discuss your annual report. Then come to number three, report for submission. Report for submission. And number four, activity report. Number five, official report. Number six, business report. Again, all these reports are not equally important, but most probably the important report is number one, newspaper report.
Number 2, annual report. Number 3, report for submission and activity report. These first four points are very, very important, and very often you also find in the exam that newspaper report is the most important chapter in plus 2 level. So thank you all. Next class I will tell you the details about the newspaper report. In my previous class I was discussing about the various types of reports like news reports, annual reports, report for submission, activity report, official report and business report. First point, newspaper report. Newspaper report. What is newspaper report? A report which is written for the newspaper for publication. That report is known as newspaper report. Again you listen, the report which is written for the newspaper for publication, that report is known as newspaper report. In the exam पे जानिबो जे परीक्षा जते बेले तमे पाइबो रिपोर्ट राइटिंग अल्टरनेट क्वेश्चन पाइबो. Suppose one question from newspaper report, another question from annual report, one question from annual report, another question from report for submission, or newspaper report, another question report for submission, or news report or activity report or annual report, like this. Any two questions you have to write a new one. And news report. First, news report. When we write a newspaper report as a staff reporter or as a news correspondent or as a news reporter or as a press reporter, we must remember the following points. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट लेखुची ସେତେବେଳେ क्वेश्चन भीतर थिबो वेरी वर्ड कौन एज ए स्टाफ रिपोर्टर. मार दी वर्ड्स एज ए स्टाफ रिपोर्टर और एज ए न्यूज़ करेस्पोंडेंट और एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर और एज ए प्रेस रिपोर्टर. यही वार्ड मान भीतर निश्चित भाव में गोटे थी. तेरे भाव यहाँ हूँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. तेणु व्हेन वी राइट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, these points must be followed. What are these points? First of all, number 1, heading or title in bold or block letter in the top middle part, leaving the same space in both sides. While I was discussing about the note making and summarizing, to try to recall the very point, I was also telling about the heading or title. Generally, heading or title is written in bold or block letter. Very important point, title or heading must be written in bold and block letter, and it is written in the top middle part, leaving the same space in both sides. Means खातार लेफ्ट साइड एवं राइट साइड रे सेम स्पेस छाड़ी की मझा मझी तमे हेडिंग बा टाइटलटा लिखिबो. हेडिंग बा टाइटलटा लिखिबो एवं ये हेडिंग बा टाइटलटा केमती लिखा जीवो, बोल्ड बा ब्लॉक लेटर रे लिखा जीवो. ए कथा मु आगुर कहिछि नोट मेकिंग पढ़िला बेले. सेकंड पॉइंट आछि राइट बाय द स्टाफ रिपोर्टर and name of the newspaper and place within bracket in right side just below the heading. हेडिंग लेखा सरला. हेडिंग लेखा सरिया परे सेकंड पॉइंट कहूची लेखा जीवो हेडिंग तल को कौन लिखा, बाय द स्टाफ रिपोर्टर कमा बाय द स्टाफ रिपोर्टर कमा नेम ऑफ द न्यूज़पेपर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स क्वेश्चन जे थिबो imagine yourself as a staff reporter of an English daily or local newspaper. So you write any name of the English newspaper or any local newspaper according to the question. Write by the staff reporter and name of the paper. पेपर ना लिखिलो प्रथम लिखिलो by the staff reporter
बाय मुझे को रखी इनवर्टर कमा भितर बाय द स्टाफ रिपोर्टर कमा नेम ऑफ दी न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर ना लिखिल एंड प्लेस नेम एवं तमे रिपोर्टर को प्लेस रो यू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस एंड बाय द स्टाफ रिपोर्टर पेपर ना एवं प्लेस ना एटा को ब्रैकेट भीतर रहिबो विद इन ब्रैकेट कोड रहिबो ब्रैकेट इन राइट साइड जस्ट बिलो द हेडिंग इन राइट साइड जस्ट बिलो द हेडिंग सरला हेडिंग सरीबार ठीक तळकू ब्रैकेट भितर बाय द स्टाफ रिपोर्टर पेपर ना एवं प्लेस ना लिखा आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर नेक्स्ट कम टू नंबर 3 कम टू लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड मार्जिन पाखक आसवा नेम ऑफ द प्लेस मंथ एंड डेट इन वन रो इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बाम पटे मार्जिन पाखक आसवा बाम पटे मार्जिन पाखे कौन लिखा नेम ऑफ द प्लेस ना तुम्हें कौ जो प्लेस रे रिपोर्टर अच्छो से प्लेस ना रख लो मंथ तारीख रहा मास जो मासरे तुम लिखुच आंसर से मास रहिबो एंड डेट तारीख रहा सपोज 27 आम कहवा 27 मे 27 कौन लिखिबो भद्रक मे 27 देन एटा रहिबो लेफ्ट साइड रे लेफ्ट हैंड मार्जिन साइड रहिबो नेम ऑफ द प्लेस मंथ एंड डेट इन वन रो इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बाम पटे मार्जिन पाखरे स्थानर ना रहिबो मास एवं तारीख एवं कोलन मार्क तापर कौन कहूँ नंबर 4 आस पुट ए कोलन मार्क सिंबल दिया पुट ए कोलन मार्क आफ्टर द डेट तारीख लिखा सरला तापर आम कौन दबा कोलन मार्क ऊपर गोटे बिंदु तल बिंदु कोलन मार्क पुट ए कोलन मार्क आफ्टर द डेट आफ्टर द कोलन मार्क यू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट कोलन मार्क सरला आम बॉडी स्टार्ट करवा जहाँ विषय क्वेश्चन अच्छी माने यूजिंग द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर यू हैव टू डिस्क्राइब द बॉडी नंबर 5 फॉर description of the body when we want to describe the body of the report some sub points must be followed जते बेला हमें बॉडी टाको डिस्क्राइब करवा मन भर क्वेश्चन आसो हाउ कैन वी एलाबोरेट हाउ कैन यू डिस्क्राइब द बॉडी ये जो सब पॉइंट मु कहि से सब पॉइंट गुड़िक तुमको हेल्प कर बॉडी टाको डिस्क्राइब करने सब पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड कौन से सब पॉइंट गुड़िक नंबर 1 कहूँ कौन ए रे कहला व्हाट हैपेंड कौन मुझे दिस चैप्टर इज नोन एज रिपोर्टिंग इवेंट एंड बिजनेस मैटर यू विल फाइंड इन बुक 3 रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड बिजनेस मैटर न्यूज़ पेपर रिपोर्ट रे फर्स्ट कहूँ ए रे व्हाट हैपेंड कौन घटिला सपोज गोटे एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट है कौन सी फायर एक्सीडेंट है कौन सी बैंक रबरी है बा कौन सी हाउस थेस्ट योर किडनैपिंग केस है जहाँ कि दैट विल बी रिटन इन द फर्स्ट लाइन व्हाट हैपेंड व्हेन इट हैपेंड केते बेले है एक्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस पॉइंट यू हैव टू राइट द एक्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बट माइंड इट you have already mentioned in your point number 3 name of the place month and date name of the place month and date but in this point date we have already mentioned the date but on that particular date the particular time must be mentioned when it happened केते बेले है suppose गोटे एक्सीडेंट है गत काली 26 मे रे मनकर संध्या 7 बेले है से संध्या 7 एक्जाक्ट टाइम जदि एक्जाक्ट टाइम यू डू नॉट नो द एक्जाक्ट पॉइंट ऑफ टाइम सो यू कैन राइट एट अराउंड 7 PM एट अराउंड 8 AM like this if you are not sure about the exact point of time you can also use such type of sentence when it happened next see where it happened को जगह रे also you mentioned the name of the place but suppose Bhadrak is not a small place in this point we have to mention the exact place suppose near Bonchoko your Sarampa
station like this, where it happened and how it happened. An accident केमिति हला किपरि हला काका मध्य पाई ही काका पाई हिची, how it happened किपरि घटिला, who are involved. ए जो एक्सीडेंटल कहाँ मझे सपोज गोटे ट्रक गोटे बाइक सहित है बा गोटे कार गोटे ट्रक सहित है, हाउ इट योर हु आर इनवॉल्व, व्हाट वाज द आउटकम. एक्सीडेंट जिते बड़े होची निश्चित भाव में गोटे रिजल्ट मिलथिबो. कौन रिजल्ट ना some may be died, some are injured, some are hospitalized. ये सब जिनस गुड़ाक दिस इज द आउटकम. And the last 2 points, public opinion and own suggestion. Public opinion and own suggestion. In some cases, we have to leave out these points, public opinion and own suggestion. Public opinion, if you have not, suppose a reporter is not always present at the spot, sometimes you have to take the opinion of the public. According to the public, they can say that when and how this type of accident happened, से कथा मते से कहि पारंती, सेति पई तांको ओपिनियन मध्य नबाकू पड़े. एवं बेले बेले जे राइटर्स ओन सजेशन बा रिपोर्टर्स ओन सजेशन ताको मध्य देबाकू पड़ी थाए. एंड एई जो सब पॉइंट गुडिक, these points will help you, but mind it, it is a 10 mark question and these points will help you to elaborate the entire body of the report, and these points must be arranged orderly. Next point of C number 6 रे name and designation. After writing the body, come to number 6, name and designation in right bottom side. लेखा सरला परे डाहाण पटुक आसीबो, बॉटम साइड मान तळ पूरा लोअर लेवल को आसिलो, तळक को आसिलो, सेठी कोन लिखिबो जे रिपोर्टर तमे निजे लेखुछ. सो यू हैव टू राइट योर फुल नेम and designation. Designation means as a staff reporter, a staff reporter, not as a only you write the staff reporter. Suppose I have given you, I will give you some example later on. The number 6, name and designation in right bottom side. निज ना लिखिल, डेजिग्नेशन माने पदवी, निज पदवी कौन, निजर पदवी होची स्टाफ रिपोर्टर, निज ना लिखिबो ता तळको लिखिबो स्टाफ रिपोर्टर. दिस मच. So these are the points should be followed in newspaper report. Mind it, for report writing, as I am telling you about the points one by one, when the examiner will evaluate your answer script, you will see that these points are arranged, whether arranged in proper order or not. Accordingly, we will evaluate your answer script. जदि ठीक पॉइंट अनुसार यही गुड़िक तुम आंसर ठीक नथिबो ताल तुम मार्क निश्चित भाव में लूज करेबो, नो डाउट. तेणु से कहूँ जे ये पॉइंट गुड़िक तुम लिखा पूर्व मन रखा दरकार. दिस पॉइंट्स विल बी सेट इन योर माइंड व्हाइल यू आर जस्ट गोइंग टू राइट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट. नेक्स्ट, थैंक यू ऑल. नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू about the, I will give you a layout of newspaper report. Thank you all. Good morning students. Last class I was telling about the newspaper report and what are the points that must be followed in a newspaper report. Generally newspaper report, again I am just going to recall you the newspaper report, and in these cases we can use 6 steps and 6 points. First point, now today I am going to tell you the layout of the newspaper report. Layout ता माने आमे को जिनस को पॉइंट गुडी को जगह रे रखिबा, गोटे आंसर भीतर लिखला बेले आमे को पॉइंट गुडी को प्लेस रे रखिबा. नंबर 1 पॉइंट मु कहितली हेडिंग और टाइटल. हेडिंग और टाइटल देख हम को देछि, हेडिंग और टाइटल लिविंग द सेम स्पेस इन बोथ साइड. उभय पाखरे रहिबो किछि जगह रहिबो, कुछ प्लेस छाड़िबो, मझि रहिला हेडिंग और टाइटल. टाइटल जस्ट ता तळको, टाइटल जस्ट बिलो द टाइटल. I have told you
about what? By the staff reporter, because staff reporter, as a staff reporter or as a news correspondent or a press reporter, all these phrases either one phrase is there in the question रे निश्चित भाव गोटे फ्रेज थी ता भीतर से फ्रेज जहाँ लिखा जाइथिबो ता भीतर आम आनिबा कोन बाय द स्टाफ रिपोर्टर एंड नेम ऑफ द पेपर एंड प्लेस नेम ऑफ द प्लेस मु लिखी बाय द स्टाफ रिपोर्टर द समाज भद्रक एंड आई हैव केप्ट इट इन ब्रैकेट लिखी से पॉइंट रे एटा काउतर ब्रैकेट भीतर रहबो एटी आई हैव गिवन ए ब्रैकेट नेक्स्ट देन कम टू योर लेफ्ट साइड ऑफ द नोट खातार लेफ्ट साइड को आसीबो लेफ्ट साइड रे नंबर 3 पॉइंट रे कोन कहूची नंबर 3 रे योर नेम ऑफ द प्लेस जो स्थान रो तमे रिपोर्टर अच्छो से प्लेस ना लिखिलो मंथ एंड डेट प्लेस मंथ एंड डेट इट मस्ट बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर बड़रू सान क्रमे जाकर स्थान मास तारीख लिखा गला प्लेस मंथ डेट and after the date we put a colon mark. This is called colon mark. After the colon mark we start the body. So the first sentence of the body will start after the colon mark. But some students also follow what just below the colon mark they can also start the first sentence, no doubt. किछि पिला अछंती कोन करंती colon mark तळको मध्ये से हमारे फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करि पारंती से किसी प्रॉब्लम ना किंतु प्लेस मंथ डेट लिखि सारा पर कोलन मार्क देलु कोलन मार्क दे सारा पर आम बॉडी रे फर्स्ट सेंटेंस आरंभ करवा तापरे सेकंड सेंटेंस पुणी तल को आसला सो आई हैव गिवन सम रोज कौन कौन कि धाड़ी मु तैयारी करछि से धाड़ी रे कौन इट इंडिकेट्स द एंटायर बॉडी ये जगह आम बॉडी लिखिलु बॉडी मीन्स द जिस्ट ऑफ व्हाट जिस्ट ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग बॉडी ए बॉडी टाक आम डिस्क्राइब करवा मु कही बॉडी डिस्क्राइब कला बेले नंबर 5 रे फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी सम सब पॉइंट्स आर देयर व्हाट इज 8 सब पॉइंट्स आर देयर ए सब पॉइंट्स को लेकिन आम बॉडी एलाबोरेट करवा बॉडी एलाबोरेट कर सारा पर लास्टली आम कौन दौचु योर नेम एंड डेजिग्नेशन जे राइटर जे लिखुची तार निज ना लिखिबो एवं डेजिग्नेशन मान स्टाफ रिपोर्टर बिकज ये लिखा जाए देख ब्रैकेट भितर बाय द स्टाफ रिपोर्टर बाय यूज करवानी केवल ओनली स्टाफ रिपोर्टर व्हाट स्टाफ रिपोर्टर मीन्स दिस इज योर डेजिग्नेशन यू आर वर्किंग एज ए रिपोर्टर यू आर वर्किंग एज ए स्टाफ रिपोर्टर ए पर्टिकुलर न्यूज पेपर जेहेतु तुम गोटे निर्दिष्ट न्यूज पेपर जने रिपोर्टर हिसाब से काम करुच से लिखा जाए स्टाफ रिपोर्टर एटी जितेबाला तुम प्रेस को पठाऊच गोटे न्यूज रिपोर्ट को प्रेस को पठाऊच प्रिंट से लिखा जाए बाय द स्टाफ रिपोर्टर दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड लेआउट ए लेआउट शो कर कौन पिला माने भूली जाती कौ जिन कौटी जगह लिखा पड़े सो यहाँ हूँ प्रॉपर अरेंजमेंट ये प्रॉपर अरेंजमेंट माध्यम आम जापर आम हेडिंग टाइटल कौ जगह लिखा बाय द स्टाफ रिपोर्ट कौट रेस मंथ डेट कौट जगह रॉडी कौट एवं नेम एंड डेजिग्नेशन मुझे सारी नेम एंड डेजिग्नेशन राइट बटम साइड इट डजंट कम टू लेफ्ट बटम साइड केबे भी लेफ्ट बटम साइड को आसो ना ये कौट को आसो राइट बटम साइड वेरी पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट यू विल ऑल्सो रिमेंबर सो आफ्टर दिस लेआउट now I am going to discuss a question. Generally this type of question comes in the exam. Imagine that you are a staff reporter of an English newspaper. Write a report about a road accident to be published in the newspaper. Imagine means you have to think yourself as a staff reporter of a particular newspaper. Particular newspaper means an English newspaper. What is mentioned in the question? Imagine that you are a staff reporter of an English newspaper. तुम निजे को भावुच तुम्हें जड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर रिपोर्टर स्टाफ रिपोर्टर एवं लिख राइट ए रिपोर्ट अबाउट द रोड एक्सीडेंट उपर गोटे रिपोर्ट लिखा टू बी पब्लिश्ड इन द जोटा कि खबर कागज प्रकाश कर फॉर दिस क्वेश्चन कम टू आंसर व्हेन वी राइट द आंसर I told you what first we have to write the heading or title
Heading or title must be written in bold or block letter. I have written in block letter. Man killed. According to the question, I start the answer. Man killed in car accident. Man killed in car accident. And this is the heading. Then come to just below the heading by the staff reporter. The jehetu kon achi English newspaper, I must write what? The name of the English newspaper, the Times of India, or the Telegraph, or the Statesman, whatever you may write, and place name Bhubaneswar, and keep it in bracket. Come to left side, place name, same place, Bhubaneswar, May, any date pakelo, then put a colon mark, and after the colon mark, you start the body. Body start an unidentified man aged 50 who was walking on the roadside just half a kilometer away from Rasulgarh traffic post was crushed to death yesterday at 11 am. This is the exact point of time, 11 am, when a car on its way overturned on him. Police later investigated and said the car was speeding and overturned while taking a sharp turn. The driver fled after leaving the car on the spot, which was later seized by the police. Within the last fortnight, there have been more than 10 road accident deaths on this road. Local people who have expressed deep concerns have appealed to the police authorities to take stern action against rashly driven trucks, buses, cars and two-wheelers. This is the entire body, and in this body I was discussing the some sub points. What happened? A serious road accident. An unidentified man aged 50 who was walking on the roadside just a kilometer away from Rasulgarh traffic post was crushed to death. Crushed to death means some unidentified by गोटे अपरिचित मनीष जार बयस होचे 50 तार मृत्यु है yesterday. Exact point of time कौन है गोटे अपरिचित लोकर मृत्यु है. व्हाट हैपेंड केते बेले है जे से एक्सीडेंट केते बेले है 11 am रे है को जगह है 1 kilometer away from Rasulgarh traffic post. This is the where it happened, and what was the outcome result? The death when a car on its way overturned on him. Police later investigated. So all these sub points are arranged orderly. After the body, then come to what? Your ending part. What? Your name and designation. You write your own name and then your designation. So this is a question, and this type of question may come in the exam. You just try to prepare that one question. Before that I have given you the layout and one question with answer. This is called what? The best example and one of the best examples of newspaper report. Thank you all. Later I will tell you some other things. Good morning everybody. Now I just discuss the second question of newspaper report. In my previous class I told you the first question, thinking yourself or imagine yourself as the staff reporter. Same type of question, but there is a little bit change of the second question. You now read the second question. Imagine that you are a staff reporter of an English newspaper. Write a report to the editor of a newspaper. This is a vital point. To the editor of a newspaper. To the editor of a newspaper. On the road accident to be published in the newspaper. So this is the difference between the first and second. First question जहाँ थला second question से आची केवल खाली I have added some words to the editor of a newspaper. माने आमे जो रिपोर्ट लिखिबा एटा का पाको लिखिबा to the editor of a newspaper.
If these words are there in a question, you remember that this answer will be started like an application format first, then come to as usual format. What is that application format? The answer to the editor as that word is there, to the editor of a newspaper, and that newspaper means English newspaper. To the editor, first you have to address the editor. To the editor, the name of the paper Times of India and place name Bhubaneswar, and you have to write the salutation, general salutation. What? When you write an application, you have to write the salutation like sir, madam. Similarly, sir, this particular sentence you also write, I am herewith submitting a report on the road accident to be published in your editorial column. As you are writing a report to the editor of a newspaper for publication, so that's why the same sentence, this important sentence must be there in your answer. I am herewith submitting a report on the road accident to be published in your editorial column, and come to the, after writing this sentence, this is only one sentence, not more than this. After writing this sentence, you come to your subscription, salutation and body. This is called subscription. Subscription means yours faithfully. Generally you write the application what? Yours faithfully, and your full name and designation. After writing the yours faithfully, you have to write your full name and designation. The full name निज ना रखिलो, तापरे designation means staff reporter, because question is there. Imagine that you are a staff reporter, so you have to write staff reporter. And after writing the application format, you come to again the normal format. Normal format means what format we have mentioned in the previous question. Previous answer se madhya rohiche format man killed, heading man killed in car accident, and again you write also by the staff reporter and paper name of the Times of India and Bhubaneswar, place name, it is in bracket. Come to your left side, place, month and date, Bhubaneswar, May 25th, colon mark, and after the colon mark your body will be started, your answer will be started. Your answer will be started means I have not quoted the full answer because the same type of answer is there in the previous question. The एका प्रकार answer मध्ये previous question अछि. You just also try to copy the same answer here, and I also the answer of question number 1 will be repeated here. After writing the full answer, you also copy the same answer from the previous question, then come to the ending part of the report, your full name and designation. The same name, you can never change the name because you are a staff reporter. You think yourself as a staff reporter. Sometimes question, imagine or thinking yourself, there is no change. Imagine or thinking yourself as a staff reporter. तमे निज को भावुच तमे जने निजे staff reporter. तेणु तमे निजे जेहेतु जने staff reporter एटू to the editor of a newspaper, to the editor of the Times of India जो format थिला से सब yours faithfully, your name, same name will be quoted in the at the bottom means same name and designation, no change. Same format to the editor of a newspaper, only there is a little bit change. First to start the application format, then you go to common format. I think it is my idea is very much clear to you. What I have told you that you are very much clear about this idea. This is your, I have also told you the 2 questions in the newspaper report. One question is general format and another question to the editor of a newspaper. After these 2 questions, I think you will be very much clear about this chapter. Okay, thank you all. Next class we will go to your annual report.